बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत। आज का हमारा जो टॉपिक है फैमिली बिजनेस एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो डेफिनेटली ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका फैमिली बिजनेस। और फैमिली बिजनेस को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। मोस्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान या जो एशियन कंट्रीज में फैमिली बिजनेस से ही स्टार्ट किया जाता है, जिसको हम अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो ऑफकोर्स वो भी एक फैमिली बिजनेस सॉर्ट ऑफ लाइक बिजनेस आता है। आज के हम इस टॉपिक में जो स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस, टाइप्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ फैमिली बिजनेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट क्रिटिकल पार्ट। सक्सेशन इन फैमिली बिजनेस, pitfall of the family business, strategies for improving the capability of family business, improving family business performance, कि फैमिली बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे इनहांस किया जाए। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक दरख्त है, उसके ऊपर डिफरेंट लीव्स हैं और उन लीव्स पे डिफरेंट जो एक बड़े इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं। फैमिली, आवर फैमिली बिजनेस ट्री। उस ट्री में क्या होता है? प्लानिंग होती है, फ्यूचर, प्रॉफिट, फाइनेंस, legacy, assets, relations, output, expenses, retirement, stress, emotions, litigation. I mean, it's like multiple things कि जो आपके फैमिली बिजनेस फैमिली ट्री में एग्जिस्ट कर रही होती है। और जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में टाइप्स पढ़ी थी, उसमें एक टाइप थी कॉर्पोरेशन। बेसिकली अगर हम फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन को लें, फैमिली बिजनेस इज अ कॉर्पोरेशन that is entirely owned and managed by member of a single family. बेसिकली आपका सिंगल फैमिली मेंबर इसको ओन कर रहा होता है। फैमिली फर्म इन अ कॉर्पोरेशन that is entirely owned by member of single family. It is also known as company owned, controlled and operated by member of one or several family members. कि फैमिली का एक मेंबर या बहुत सारे मेंबर्स उसको ऑन कर रहे थे, उसको रन कर रहे होते हैं। फैमिली बिजनेस इज वन इन विच वन और मोर मेंबर ऑफ वन और मोर फैमिलीज हैव ऑनरशिप। एक या एक से ज्यादा मेंबर्स ऑनरशिप ऑन करते हैं। इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स बिजनेस। इंटरेस्ट है, जो सिग्निफिकेंट कमिटमेंट है टूवर्ड्स बिजनेस, वो ऑफकोर्स सबकी एक जैसी होती है। समटाइम हम कह सकते हैं कि कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स चल रहे होते हैं। फैमिली बिजनेस के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इट्स नॉट मीन कि जी वहां पे रिक्रूटमेंट पार्ट को इग्नोर किया जाता है। रिक्रूटमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ नॉन फैमिली प्रोफेशनल्स, क्योंकि इनकेस आपने हायरिंग करनी है तो उसके लिए क्या रिक्रूटमेंट एंड रिवॉर्ड्स ऑफ नॉन फैमिली प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगा? रिटायरमेंट एंड स्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट्स की प्लानिंग क्या होगी? इंडक्शन एंड ग्रूमिंग, ऑनरशिप स्ट्रक्चर, प्रिजर्विंग वेल्थ, conflict resolution mechanism, business vision strategy and governance, family vision strategy and governance, succession planning, compensation and reward for family। अगर हम देखें तो नॉर्मल बिजनेस में हम देखते हैं कि लाइक आपका विजन और मिशन और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होती हैं, बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस, उसमें फैमिली विजन मिशन आपका एक सेपरेट एंटिटी होता है और ऑन द अदर साइड आपका बिजनेस विजन स्ट्रेटेजी गवर्नेंस वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली बिजनेस क्या है? फैमिली बिजनेस आर आइडियल इन नेचर एज दे आर लॉयल टू द प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडर एंड दस इंश्योर यूनिफॉर्मली इन देयर ऑपरेशंस। बेसिकली सबसे मेन चीज फैमिली बिजनेस में जो एक पॉजिटिवली भी कहा जाता है कि लॉयलिटी फैक्टर्स जो ऑनर का है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। सक्सेशन इज वन इम्पॉर्टेंट डिसीजन विच डिटरमाइन फ्यूचर effectiveness in terms of company operations। सक्सेशन की यानी कि जो ऑनर है उसके बाद उसका बेटा उसको ऑन करेगा, उसका ग्रैंडसन करेगा, पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडसन, लाइक वो डिफरेंट टर्म्स उसमें आ रही होती है। फैमिली बिजनेस comprises of family members in business operation ensuring effective utilization in house talent in a family। यानी कि आपको फैमिली बिजनेस में जो बेसिकली जो आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना होता है विद इन अ फैमिली। सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम। सिंगल माइंडेड जो डेडिकेशन है ऑफकोर्स फैमिली मेंबर्स की, बहुत सारे टफ डिसीजन में आपको एक
उसमें परफॉर्मेंस देनी होती है। यहाँ पर हम फैमिली बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें। इफेक्टिवनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इज डिटरमाइंड डिपेंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग परसिस्टिंग विद इन द फैमिली, कि ऑफ कोर्स विद इन द फैमिली ही आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसी परसिस्टिंग रखनी होती है कि डेफिनेटली आपका बिजनेस रन रहे और एक स्ट्रॉन्ग वे में रहे। फैमिली बिजनेस में बी comprised ऑफ वन आर मोर देन वन फैमिली इन बिजनेस ऑपरेशंस। एक ही एक से ज्यादा फैमिली बिजनेस मेंबर्स आपके जो होते हैं, यहाँ पर हम बात करें कि एक ही एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। एक और जो पॉइंट, फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग आर नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा भी होता है कि आपका कोई ऐसा मेंबर या फैमिली पर्सन जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता बट वो बिजनेस का पार्ट होता है। फैमिली बिजनेस वैल्यूज आर रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज पोसेस्ड एंड फॉलोड बाय फैमिली मेंबर्स। वही जो बात मैंने पहले ही कही थी जो ट्री में, कि ऑफ कोर्स अगर एक नॉर्मल बिजनेस होता तो उसमें तो बिजनेस के विजन और मिशन और बिजनेस की वैल्यूज होती हैं। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस, इट्स अबाउट कि उसमें फैमिली वैल्यूज भी बहुत हद तक उनका इम्पैक्ट होता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव लीगल कंट्रोल ओवर बिजनेस। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको लीगल कंट्रोल होता है ओवर बिजनेस। Now here we will discuss about importance of family business contributing to economic development. बेसिकली पाकिस्तान में क्या एशियन कंट्रीज में, एशियन वर्ल्ड्स में अगर हम देखें तो फैमिली बिजनेस बहुत मेजर रोल प्ले करी है टू इम्प्रूव कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ economic development. Family business play a crucial role in economic development of most of the countries. Retail sector, small scale industry and service sector are owned by family business. Spirit of entrepreneurship. Family business has contributed towards development and has been successful in country like Pakistan, और डेफिनेटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज में फैमिली बिजनेस की एक बहुत वर्थ है। स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम एग्जांपल लें तो ऑफ कोर्स स्लम्स पैकेजेस, मॉल पैकेजेस, नेटसोल, इट्स अ लोकल इंडस्ट्री एग्जांपल कि जहां पर ऑफ कोर्स जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस रन हो रहा है। चैरिटी, जो इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस में चैरिटी का फैक्टर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई है। फैमिली बिजनेस इन पाकिस्तान अलोंग विद देयर डेवलपमेंट हैव आल्सो कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक बाय इन्वेस्टिंग, लाइक कुछ एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ हॉस्पिटल्स बना लिए या कोई एनजीओस बना ली, वेलफेयर हॉस्पिटल बना लिए, तो ये चीज फैमिली बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई है। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ट्रस्ट लॉ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। हम देखते हैं कि पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व आउटसाइड यूजुअली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन लॉन्ग रन। कि नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है या अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती है इन फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेटली उनको फेस करना पड़ता है विद पार्टनरशिप में। इन केस ऑफ फैमिली बिजनेस एज ऑल पार्टीज इन फैमिली आर अफेक्टेड बाय लॉस। इन केस अगर फैमिली बिजनेस में लॉस हो जाता है तो ऑफकोर्स they don't involve any sort of conflict and difference in point of view. They try and resolve it internally in the family, ensuring business is not affected by the same. Of course, वो चाहते हैं कि ना फैमिली सफर करे और ना ही बिजनेस, तो वो इंटरनली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्मॉल, अजाइल एंड क्विक टू रिएक्ट एज मैनेजिंग टीम साइजेस, फैमिली बिजनेस इज स्मॉल compared to the other form of business. Decision making process involve less period of time which help to take timely decision. Basically timely decision आपका जो होता है वो बहुत strong होता है। It's another important factor of family business. Information is source of advantage. As family business is private firm, it is not required to take decision in accordance with pressure from other source, and strategies of business need not to be revealed to outside of business. बेसिकली जैसे आप बाहर के किसी बिजनेस में होते हैं तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं डिसीजंस के, बट इन केस ऑफ आपके फैमिली बिजनेस में ऐसा कोई सीन नहीं होता। नो हियर वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में कितनी टाइप्स हैं? फैमिली ओन्ड बिजनेस, फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस,
family owned and led business. Basically, it's like three type of business. Now here we will discuss about separately family owned business क्या होते हैं. Is a profit organization where number of voting shares but not necessarily majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other member of family. बेसिकली लास्ट में नहीं होता कि जो शेयर्स हैं वो एक ही फैमिली मेंबर ऑन करे, बट हाँ उसका जो इम्पेक्ट है वो फैमिली मेंबर्स पे डेफिनेटली इम्पेक्ट करता है. फैमिली ऑन्ड एंड मैनेज बिजनेस is a profit organization where number of voting shares but not necessary majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other members of family. In this business have achieved participation by one family member in the top management of the company so that one or more family members have अल्टीमेट मैनेजमेंट कंट्रोल, ताकि मैनेजमेंट का आपका कंट्रोल रहे. एक फैमिली मेंबर लाजमी है कि यहाँ पे टॉप पोजीशन पे सीज पोजीशन पे हो. फैमिली ऑन एंड लेड कंपनी इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स. अगेन वही इसमें भी सिमिलरिटी ये पॉइंट आ रहा है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है व नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स बट नॉट नेसेसरी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय मेंबर ऑफ सिंगल एक्सटेंडेड फैमिली. बट लास्ट में नहीं कि एक ही सिंगल फैमिलीज को ऑन करे, इसके शेयर्स को ऑन करे, बट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इन दिस बिजनेस हैज active participation by one family member in the top management of company so that one or more family members have ultimate management control. Of course management control होने के लिए टॉप पोजीशन पे सीज पोजीशन पे एक फैमिली मेंबर का होना लाजमी है. But in this matter, one member has major influence on business activities who in charge of regulation activities of business and member of family business. लेकिन एक पर्सन जो है वो एक्टिवली चार्ज होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का, एक्टिविटीज का, बिजनेस का एंड मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, और वो फैमिली मेंबर ही होगा. आपके ओपिनियन में क्या इग्नोरिंग फैमिली बिजनेस, क्या फैमिली बिजनेस को लोग इग्नोर करते हैं, या न्यू जनरेशन जो आज की है क्या वो अपनी फैमिली बिजनेस को उस तरह से ऑन नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए. यहाँ पर एक हम और मॉडल की बात करते हैं, थ्री सर्कल मॉडल ऑफ फैमिली बिजनेस, ऑनरशिप, बिजनेस एंड फैमिली. ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, फैमिली, बिजनेस, ऑनरशिप. थ्री सर्कल ऑफ फैमिली बिजनेस को हम बिजनेस सिस्टम comprises of startup, expansion, formalization and maturity of business. बेसिकली जैसे कि एक बिजनेस का स्टार्टअप लिया जाता है, फिर उसकी एक्सपेंशन की जाती है, फॉर्मलाइजेशन होती है एंड देन आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ बिजनेस की तरफ कन्वर्ट होता है. फैमिली सिस्टम, यंग बिजनेस फैमिली एंटरिंग बिजनेस फैमिली वर्किंग टुगेदर, लाइक कि यंग जो बच्चे हैं, सपोज लाइक अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तान में भी तो बहुत सारी ऐसे जैसे नेटसोल हो गया, मास्टर ग्रुप हो गया, जैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे उनके बच्चे उस बाहर से पढ़ के आ गए तो यंग ब्लड जो है वो बिजनेस में एंटर हो गया, उन्होंने यानी कि अपने बड़ों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया. ऑनरशिप सिस्टम, कंट्रोलिंग ऑनर, सिबलिंग्स, पार्टनरशिप, कजन्स. जो ऑनरशिप सिस्टम है बेसिकली इसमें कंट्रोलिंग ऑनर सिबलिंग्स के साथ, पार्टनरशिप्स के साथ और कजन्स के साथ बिजनेस को आगे परसू किया जाता है. बिजनेस में यहाँ पर हम गवर्नेंस, इंटीग्रेशन, ऑनरशिप की बात करेंगे. शेयर होल्डर असेंबली, होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑपरेटिंग कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन बिजनेस आ जाएगा. ये भी हम उसी थ्री सर्कल को ही लेकर डिस्कस करें. बिजनेस में कैरियर डेवलपमेंट कमेटी आ जाएगी. फैमिली में फैमिली काउंसिल, फैमिली असेंबली, फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आप देखिए फैमिली में भी तीन चीजें आ रही है, फैमिली काउंसिल आ रही है, फैमिली असेंबली आ रही है, फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रही है. फैमिली ऑफिस आ जाएगा. देन आफ्टर आप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो बिजनेस में कैरियर डेवलपमेंट कमेटी आती है, ऑपरेटिंग कमेटीज आती है, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर्स आते हैं. और ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप में शेयर होल्डर असेंबली आएगी. Governance of family business. There are three components of governance of family business. Periodic assembly,
assemblies of families, family council meeting. If the size of the family is small in size, then member of family can meet on frequent basis. When the operation of the family business expands geographically, each team has to choose in representative for every unit who on behalf of every areas can meet on regular basis to decode on plans, create policies and strengthen family business communication. बेसिकली फैमिली बिजनेस के भी रन करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एरिया पे है, तो आपको वहां पर डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन कह लें, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कह लें, उनको वहां पे करना होता है। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली पॉलिसीज एंड गाइडलाइन, vision and values that regulate members' relationship in business. Dual plan may be details are simple in nature, but every family in is beneficial by the same. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नॉट अबाउट कि ये एक फैमिली मेंबर को सपोर्ट करेगा या उसके फेवर में होगा। इट्स अबाउट कि जो वैल्यूज हैं, जो विजन और मिशन है, जो फैमिली वैल्यूज है, वो सबके लिए सेम है। और जो फैमिली को जो रिवॉर्ड की बात आएगी, बेनिफिट की बात आएगी, वो भी सबको सेम मिलेगी। इस पिक्चर को डिफाइन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि जैसे फैमिलीज में अगेन एक चीज होती है कि फैमिली वैल्यूज होती है, और ये बात मैं बहुत प्राउडली कहती थी कि हमारे घर में हमारी फैमिली वैल्यूज, इट्स अबाउट कि आपने किससे किस तरह बात करनी है, आपने मेट से कैसे टैकल करना है, आपने घर के लोगों से कैसे करना है। अगर इनकेस किसी के रूम में एंटर होने, जो अभी हम वैल्यूज की बात करें, तो मुझे उससे ये बात जरूर याद आई है कि एटलीस्ट आपको बताया जाए कि ये वैल्यूज अब खत्म होती जा रही है। अगर इनकेस आपने किसी के रूम में एंटर होना है तो आप नॉक करें। अगर आपने किसी से बात करनी है तो उससे पहले पूछ लें कि इफ ही और शी इज कंफर्टेबल। तो इसी तरह फैमिली, जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें भी ओरिएंटेशन दी जाती है, डिस्कवरी, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और उसको फिर रिव्यू किया जाता है कि ताकि कोई गैप रह गया तो उसको बेहतर किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। बेसिकली अगर हम बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग फैमिली असेंबली और काउंसिल मीटिंग, ड्वेल क्लैरिटी ऑन रूल्स, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स। अगर हम देखें तो फैमिली बिजनेस में सबसे मेजर पार्ट जो आता है रूल्स का, राइट्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने का। एंड आई एम ऑलवेज सेइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया जाता है, आप किसी का फोर्सफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। Encourage member of family employees and owners family to act responsibility towards the family and business. फैमिली बिजनेस को रन करना कोई आसान बात नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज, जो मेन फैक्टर आता है कि ना सिर्फ आप बिजनेस को ऑन करते हैं बल्कि आप अपनी फैमिली को भी ऑन करते हैं। रेगुलेट अप्रोप्रिएट फैमिली एंड ऑनर इंक्लूजन इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस का जो डिसीजन है, उसकी जो डिस्कशंस है, वो बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत मैनरेबल वे से होती है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय फैमिली काउंसिल मीटिंग, प्लान असेंबली मीटिंग विच otherwise has to be arranged by CEO in company, discuss current business, ownership, family issues and keep family informed about the issues. ना सिर्फ इश्यूज को डिस्कस किया जाता है बल्कि उसको रिजॉल्व किया जाता है। हेल्प फैमिली रीच डिसीजन एंड collectively focus on attainment of single goal. Keep the board of directors informed about family views on company and keep in touch with the board about key business policies and plans. Dwell plans and policies in line with the board that regulate family activity with business. Of course, family activity को business के साथ involve किया जाता है। फैमिली बिजनेस में ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्राई अवॉइडिंग इशू इन फैमिली while seeing that key family goals are satisfied. बेसिकली गोल्स आपके तभी सेटिस्फाइड होंगे जब आप जस्टिफाई कर रहे हो, जब आप प्रॉपर एक रूल्स एक रेगुलेशंस के साथ, ये नहीं कि एक फैमिली मेंबर के लिए कोई और रूल है तो दूसरे के लिए कोई और है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स बहुत सारी जगहों पे एक चीज आती है कि जी बड़े भाई के लिए कुछ और रूल है, छोटे के लिए कुछ और है। तो ऐसा नहीं होता। फैमिली बिजनेस में एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो वैल्यूज क्रिएट की जाती है तो वो सबके लिए सेम होती है। लॉयल, इन्फॉर्म्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग फैमिली शेयर होल्डर्स।
कोड द फैमिली फॉर बिजनेस टैलेंट। बेसिकली आप अपने बच्चों को हाई स्टडी के लिए भेजें, उनके एक्सपोजर को इंक्रीज करें ताकि वो आपके बिजनेस को आके बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। क्रिएट एजुकेशनल इवेंट टू इंकरेज एजुकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स टुवर्ड्स फैमिली बिजनेस। ऑफ कोर्स अगेन वही पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को प्रमोट करें, उनको उनको इनकरेज करें कि वो हाई स्टडी करें और बेहतर वे से आपको परफॉर्म करके दिखाएं। फैमिली बिजनेस में ये बहुत मेजर फैक्टर है कि प्लान फैमिली सोशल गैदरिंग। आप फैमिली गैदरिंग को कंडक्ट करें, उसमें आप लाइटर मोड में ऑफ कोर्स एक अच्छे फन के साथ बहुत सारे मसाइल का हल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। रीजन फॉर कंडक्टिंग फैमिली बिजनेस, प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, कैरियर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड फॉर फैमिली एम्प्लॉयज, family employees compensation, succession process, including retirement ages, ownership agreement, which comprise of buy and sell agreement, dividends। बेसिकली रीजन क्या है फैमिली बिजनेस को? सबसे मेन रीजन जब मैं इन शॉर्ट कहूंगी कि वही बात है कि हमने जॉब सीकर्स तो बहुत सारे बना लिए। पहले का कि इसको मेन क्या रीजन है, तो मेन रीजन यही आती है कि फैमिली बिजनेस मीन्स कि लाइक आप फैमिली के बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जॉब मीन्स कि लाइक आप उनका बिजनेस को, उनकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ फैमिली बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ फैमिली बिजनेस रेफर्स टू रीजन व्हाई business came into existence, vision and mission of company, people contribution towards success of business and contribution of business towards development of society on the whole। बेसिकली आप देखिए कि सबसे मेजर रीजन ये आती है कि आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, आपका विजन और आपका मिशन क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। एक चीज आती है, एक फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो क्या ऐसी कमी है, क्या ऐसी रीजन है कि बच्चे आगे एक्सपेंशन नहीं लेते, बच्चे आगे से ऑन नहीं करते। तो इसी गैप को कवर करने के लिए इस जो सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीजें हाईलाइट की जा रही है कि फैमिली बिजनेस की भी क्या वर्थ है। रीजन टू क्रिएट हिस्ट्री ऑफ फैमिली बिजनेस, फाउंडर विजन एंड मिशन रेफर्स टू रीजन व्हाई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन ऑफ कंपनी अंडर वेरियस लीडरशिप and insight about founder and his vision and mission। बेसिकली ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस को रन करता है, उसको सबसे मेजर रीजन तो कि बिजनेस की एग्जिस्टेंस क्या है, विजन और मिशन क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या हो रही है, लीडरशिप, और वो किस अम्ब्रेला के अंडर ये सब चीजें आ रही है। Historical accuracy, without valid information about family business customer, employees of business may be biased by wrong information to other source about purpose of business and its contribution towards society. To avoid this problem, detail of business should be documented on timely basis। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, बेसिकली हिस्टोरिकल एक्यूरेसी मीन्स कि बहुत ज्यादा इसकी वर्थ है कि विदाउट वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली बिजनेस कस्टमर एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस मे बी बाइस्ड, कि ऑफकोर्स आप बाइस्ड हो जाए, आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें अदर सोर्सेज अबाउट पर्पज ऑफ बिजनेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए इट्स द बेस्ट वे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन राइटिंग हो। Earning long-term employees, long-time or retirement employees who have contributed towards success of family may have feelings that the efforts toward business have been forgotten. If proceeding of business are recorded in form of documented past employees of company, dwelt from belonging towards company। बहुत सारे आपके ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम पाइनियर एम्प्लॉयज कहते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट, उनको ऑन करना, उनको ऑनर करना सबसे मेन एफर्टेबल है। और इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि उनकी क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उन्होंने कब से ज्वाइन किया, क्या उनकी जॉब हिस्ट्री, सब चीजें। Thanking customer and vendors, maintaining good relationship with customers and vendors, especially the ones who have spotted during critical situation, is very important। Honors by documenting these people contribution get way to publicly thanks these parties contribution। अगेन अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें तो किसी वेंडर की जरूरत ही नहीं,
हम तो वेंडर के बगैर ही बहुत कामयाब चल रहे हैं। तो आप सबसे नाकाम है, क्योंकि रीजन ये आती है, जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि आपका एक कस्टमर नहीं है, वेंडर भी आपका कस्टमर है, बैंक भी आपका कस्टमर है। तो इसलिए आपको सबको ऑन करना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। बैकग्राउंड फॉर द यूनिफॉर्म न्यू हायर्स potential clients, bankers, and investors may not know the company background, during which document data of company will su- specific to the needs. Benefits of history of family business. Independence between company and community is documented, as is the owner's individual contribution and involvement in community affairs. Succeeding family members have valid resource from which they can rely on for suggestion to overcome persisting problem. Documenting company contribution and commitment to the community builds sense of confidence among clients, potential clients, which helps in strengthening relationship between business and key individual related to the business. Content created for book can be recreated for others media, including company brochure, websites, press release, newsletter, etc. Family business that create quality handbook will always be valued and treasured. बेसिकली आपको फैमिली बिजनेस को भी एक ऑफ कोर्स जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसको पब्लिश करना, ये सब कुछ ये आपकी फैमिली बिजनेस को इन्हांस, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ फैमिली शेयर होल्डर्स। बी नॉलेजेबल अबाउट कंपनी ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, सर्विस, लोकेशंस, टॉप मैनेजर्स, इंडस्ट्री, कंपटीशन, मेयर्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि ये वो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हैव इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक कंपनी फाइनेंस एंड बी able to read and ask questions about the income statement and balance sheet of their company. जैसे इन स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जब आप एम्प्लॉयज होते हैं तो आप अपने लिए काम करते हैं, तब आप दूसरों के लिए काम नहीं करते। बट ऑन द अदर साइड व्हेन यू आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स मीन कि यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। आप जब दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स, तो तब आपको नहीं पता होता कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपकी कंपनी की स्टेटमेंट क्या है। बट ऑन द अदर साइड जब आप दूसरों के लिए काम मीन्स कि लाइक जब आप अपने लिए रियल मीनिंग में कर रहे हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जब आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू नो अबाउट योर बैलेंस शीट, यू नो अबाउट योर कंपनी स्टेटमेंट। अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड करना, understand board member qualification and participate in screening of board members, constructively questions management and other suggestions to the management। और बेसिकली आप ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को अच्छे जो एक कंस्ट्रक्टिव आपका कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस है आप मैनेजमेंट को दे सकते हैं। बिजनेस में जब आप पब्लिकली सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस, आप मैनेजमेंट डिसीजंस को पब्लिकली सपोर्ट करें। Keep appropriate company information in strict confidence and recognize that shareholders are not entitled to all company information on demand. Where possible and useful, generate business lead. Try and provide additional investment capital. यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली शेयर होल्डर्स फ्रॉम मैनेजर्स ऑफ बिजनेस। क्या आपके फैमिली शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके फैमिली मैनेजर जो आपका है, जो आपका बिजनेस का मैनेजर है। टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड कंपनी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटस बिफोर इंफॉर्मेशन बीइंग रिलीज टू द जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक के पास जाने से पहले वो इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन है, कंपनी की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस है और कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो रिलीज होने से पहले पब्लिक में वो आपको बताएं। ओपिनियंस बाय कंपनी board and management to shareholder on the above mentioned information. Ability to participate in the election of board of members. Fair policies that protect shareholder interests but
also requires their cooperation and risk taking. Acceptance economic performance by the company, including reasonable dividends and capital gains. Succession matrix क्या है? Family governance, honor, motivation and perspective, personal financial planning, business structure, business performance, strategic planning, leadership and management and teamwork. Successor, ऑफ कोर्स आपका सक्सेसर क्या है? फैमिली डायनामिक्स क्या है? फैमिली गवर्नेंस, सक्सेशन मैट्रिक्स, इट्स रियली इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स बेसिकली। फैमिली गवर्नेंस, फैमिली डायनेमिक्स क्या है? ऑनरशिप, वही बात आती है, ऑनर, मोटिवेशन, पर्सपेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल और बिजनेस प्लानिंग क्या चल रही है? लीडरशिप क्या? तो इसके बिहाफ पे आप एक सक्सेसर, सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू एक सक्सेसर रेडी कर सकते हैं। Succession in family business. First family succession plan, then business succession plan. पहले आप फैमिली का सक्सेशन प्लान बनाएंगे, देन आप बिजनेस का बनाएंगे। जैसे हम अगर किसी कंपनी में होते हैं, बीइंग एचआर, जब मैं सक्सेसर प्लानिंग करती थी तो मैं हमेशा ही बात करती थी, आइदर लाइक टॉप मैनेजमेंट सीज और डीज की बात हो या मैनेजर्स एंड अबव की, तो मैं हमेशा ही कहती थी कि आपका सक्सेसर मीन इट्स नॉट अबाउट कि जी आपकी जॉब चाह रही है, इट्स अबाउट कि यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पोजीशन। फैमिली बिजनेस में जो है, फैमिली बिजनेस का सक्सेशन प्लानिंग आप पहले करते हैं, देन आप बिजनेस का प्लान करते हैं। फैमिली बिजनेस प्लान मस्ट recognize and accommodate the need, goal and objective of each member of family. Family succession plan has to be developed first, as if business plan is designed in advance, it proves to be difficult to honor to coordinate goals of family members towards business. बेसिकली कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आपके सेम ही लेवल पे आपके सक्सेस से बहुत सारे रेडी हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंसीडर होता है। फैमिली बिजनेस प्लान शुड इंक्लूड फॉलोइंग डायमेंशंस: strategies to put business interests ahead of family business, emphasizes merit over family positions, income for working members of the family and shareholders, the business environment during transaction, treatment of loyal customers, tax consequences. फैमिली फर्स्ट बिजनेस और बिजनेस फर्स्ट फैमिली, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। Important issue to determine before beginning family succession plan is whether yours is family first business or business first family. It is often seen that most of the business fail to succeed when managed by the second and third generation of the business. जो मैंने पहले बात की है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब आपकी फैमिली में 7-8 या 5-6 या 3-4 आपस में भाई या फैमिली होंगे, मेंबर्स होते हैं, उनके आगे से बच्चे, तो वो बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि जी सक्सेसर कौन होगा, हु इज द फर्स्ट वन। Succession management. Business families take advice for a business advisory board who suggest on eligible person for transaction. Advisory board are not experts in managing business but are consultants who suggest strategies for effective succession management. Business valuation may not be formal written report but is required as part of the annual strategic planning process. Reason for evaluating family business are as following: buying or selling shares to employees, retiring or selling to other family members, planning gift for hires, anticipating extra tax problem, providing adequate key man insurance governance, tracking of business plan towards achievement of result. Buying and sell agreement is used to transfer share ownership for buy and sell agreement. This agreement is essential between related parties and shareholder in namely. It is agreement to transfer a business interest to hire for less than fair market values. The agreement is real. It is part of bona fide business agreement.
Key points to be considered before succession plan. Quick decision on business plan process will provide more alternatives to the process. A child then having right to inherit business should have ability to manage family business. Children must be encouraged to out of family business so that they have better insight about competition persisting in market and accordingly develop strategies for development of own business. Establishing an outside as advisor for family business may prove to be risky, for which experts in succession planning should be chosen from management team within the family business. यहाँ पर हम देखें कि जो ऑफकोर्स फैमिली बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. कंडक्टिंग फैमिली मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस विल हेल्प establish and keep the family focused on rules, goals, and objectives. Develop non-business interest. Develop financial resources that are independent of business. Evaluate component successor, which requires to assess whether person to be chosen as successor has potential to lead the business will be accepted by all members in family. Check this willingness to control the business. Person who will be chosen as successor should be given an appropriate standards to the achieved, which will help him design effective strategy and have yardstick to compare his actual performance with expected one. Ways to ease transaction process. यहाँ पे हम अगर बात करें फैमिली बिजनेस की, तो फैमिली बिजनेस में हायर मोस्ट कॉम्पिटेंट एडवाइजर बेसिकली बहुत जो कॉम्पिटेंट एडवाइजर को हायर करने का पर्पस ये है कि जो ट्रांजेक्शन का या सक्सेशन प्लानिंग का जो प्रोसीजर इट्स नॉट रियली इजी. Succession planning is complicated process and require advice of experts on the same. कि experts की opinion required होती है. Business valuation. When business transaction takes place, it leads to change in controlling hands and accordingly even present situation may change in business. Depending on the purpose of the valuation, cost vary accordingly. Usually business owners value family business for purpose of strategic planning of their business. ट्रांजेक्शन प्रोसेस में जो एक और हम स्टेप उठाते हैं वो है फंडिंग टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस may need to grow significantly in order to pay the transaction cost, which include tax, insurance, professional advisors. Fund available for expansion should be retained in the process of transactions. ऑफ कोर्स जहाँ पे फैमिली बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं वहां पे कुछ पिटफॉल्स, कुछ डिमेरिट्स, प्रॉब्लम्स और फैमिली बिजनेस भी आते हैं. लैक ऑफ फोकस एंड स्ट्रेटजी. फैमिली बिजनेस इनिशियली परफॉर्म इन effective manner, but at later point of time when aspect of transaction comes into picture, family business tends to lose its track from its actual vision. बेसिकली यहाँ पे जो मैं मेजर डिफरेंस बताती हूँ, ना प्रैक्टिकल लाइफ हम देखें तो अगर इनकेस अगर आपके किसी ने ग्रैंडफादर या फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो ट्रांजेक्शन मोड जब न्यू जनरेशन पे जाती है तो ऑफकोर्स न्यू जनरेशन में और जो जिन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया था फादर या फोर फादर्स ने, उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है. लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. Data maintenance practice in family business usually will not be in par with that of private companies, which proves to be major hurdles during decision making process. Basically professionalism नहीं होता, प्रॉपर डाटा को मेंटेन नहीं किया जाता जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है. डिफरेंस इन एजुकेशन लेवल ऑफ फैमिली मेंबर्स. बेसिकली difference in educational level of family members, which drives some people to follow obsolete method while others may focus on implementing latest technology and practice in business. Basically वही बात जो मैंने पहले वाले फोकस पॉइंट में की है
कि अगर इन केस जो कम्युनिकेशन गैप के साथ एजुकेशनल गैप का भी जो डिफरेंस आता है कि जो पुराने लोग होते हैं वो ऑब्सोलीट जो हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स उनको यूज कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद न्यू टेक्नोलॉजी। और जो न्यू जनरेशन होती है वो न्यू चीजें, न्यू पॉइंट्स को ओपन करना चाहती है। फैमिली बिजनेस का एक जो और मेजर ड्रॉबैक आता है, rivalries between sibling in company which may end up in separation of family business। आपकी जो फैमिली के जो डिफरेंस जो होते हैं, कंफ्लिक्ट होते हैं, वो इस हद तक एक्सट्रीम कर जाता है कि डेफिनेटली वो जो एंड अप होते हैं वो बिजनेस के सेपरेशन से चलता है। डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉय इन कंपनी, डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉयज की तरफ जो एटीट्यूड बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। इनएबिलिटी टू सेपरेट फैमिली इंटरेस्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, short term approach towards business, leading to an absence of investment in employees and product development। शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होती। अगेन वही जो पहले बात की है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं होती है। बेसिकली कस्टमर की तरफ सेंसिटिव नहीं होते क्योंकि आपकी अनकम्पिटिटिव मार्केट रिजल्टिंग इन वीकर मार्केट स्किल्स नहीं होती। कोई कस्टमर्स को गेन करने का, ये कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ड्रॉबैक में कंसिडर होते हैं। अप्रोच टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस, ऐसी क्या अप्रोच अफोर्ड की जाए, क्या इंप्लीमेंट किया जाए कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। कॉपिंग अप्रोच विच इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग टू नेगोशिएट among family members, try and resolve conflict and agree on common terms। बेसिकली आप उनके साथ ऐसे निगोशिएट करें, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस करें कि फैमिली मेंबर्स के आपस में जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। ट्रीटरी अप्रोच, इन दिस अप्रोच द एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली विल बी allotted with the power to frame rules and control business activity, but this approach has not proven to be successful as most of the time elder person in family may not prove to be effective manager for business। बेसिकली यहाँ पे एक चीज बहुत फैक्ट आता है कि जो हम पहले भी बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की जाती है। मेच्योरिटी कोई बाय एज नहीं होती, मेच्योरिटी इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, जो उसको ऑन करती हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये कि अगर जी कोई बड़ा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं की जाती, फोर्सफुली नहीं दी जाती है, ऑन की जाती है। मैनेज्ड अप्रोच, दिस अप्रोच स्टेट्स दैट person who has ability to maintain better relationship with key individuals of business and have ability to understand business and manage the same should be appointed as lead person of the business। कि जो मैनेज कर सके अपने बिजनेस को, उसको स्टेबल कर सके, उसको प्रॉपरली आगे एक्सपेंड कर सके। स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग कैपेबिलिटीज ऑफ फैमिली बिजनेस, inculcate professionalism in family firms। Professionalism in business refers to the retaining of effective talent in company, proper documentation of business transaction planning, and implementation of efficient strategies for success of the business। Replenishing entrepreneurship basically refer to expand existing business and be role model for their families to open business of their own। Good management refers to proper communication of information among family members about present business and utilization of available resource in business। Ability to change, business environment is dynamic in nature for which business have to renew their strategies on regular basis to meet demand of changing situation to compete the market, have strategic plan। Situation of business are unpredictable in nature nature, so present plans of the business should be designed keeping in point about future strategy in picture। Have active board of directors, refer to have competent employees in business who can assess future requirements and accordingly management business resource and take decision in business।
Improving family business performance. Core value of family business act like yardstick of family members to act accordingly towards business. Core values are comprised of training of family members, newly entering family business, future finance and accountability of these members towards the business. Impact of family value on business performance. When members of family are clear about business expectation, they can formulate their strategy well in advance, which help them enhance quality of their performance toward business. Training. Member of family business should be trained the about the family values, competition existing in market and skills required to be possessed by in order to have competitive advantage in business market. Management development plan is generated by top management people in company. The purpose is to predict staffing need and plan in for career growth and development for family as well as non-family members in business. Management development plan identified the key jobs in the current company and career aspiration of the key managers. It's predict when jobs are should be vacant in future. It has to focus on balancing development of fires in business and encourage protective teamwork. एक चीज आती है कि जी who should create the plan. Business plan should be created by owner, manager, human resource person and top manager from key function in the business. आपके जहन में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं? What will happen if I am not prepared for this? How do I maximize the value of my company? How long do I want to work? Who do I need to think about? How healthy is my company? What plan will work for the benefit of all my stakeholders? Basically, business plan कैसे create किया जाएगा? Creating a business plan. Draw company 5 years organization chart. Circle position of future organization chart at all level and the most critical one of the business. List the name of the individual in those jobs, their age now and in 5 years. List set of employees who may retire and who are planning to leave organization in future. What is the age of owner manager and he should be doing in future 5 years? What is the age of successor and where should he or she be in 5 years? What is the best career path of the person in next 5 years? What policy or policies can be derived from these discussion? What should be communicated in the successor managers and employees? Family reunion games to promote family values. Family reunion basically refer to coming together of family members for occasion event in family. These kind of event give platform to family members to have discussion on various matters in relation to family and family business. फैमिली बाउंडिंग बेसिकली अगर मैं फैमिली रीयूनियन की और बहुत अच्छी एग्जांपल दूं तो पहले अगर देखा जाए तो फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे और बहुत टाइम तक चले उसमें एक चीज होती थी कि एक हर फ्राइडे अगर इनकेस पहले फ्राइडे को जब छुट्टी होती थी हम अपने फोर फादर्स के टाइम पे देखते हैं तो हर फ्राइडे को सबने एक ही जगह पे नमाज के लिए इकट्ठे होने family bonding is crucial component of every successful family. It leads to family communication system that encourage growth and prosperity for business while building good bonding among family members in business. Family values influence the way in which family business is managed and operate. Ethics of family business are shaped by value of the family. Family religion play important role in operation of business. Business may not be prefer market in certain product which their religion don't permit for.
बेसिकली जिस चीज का आपका मजहब इजाजत नहीं देता, तो फैमिली नॉर्म्स और वैल्यूज भी ये कहती है, फैमिली रिलीजन भी ये कहता है कि हम उसको प्रमोट नहीं करें। फैमिली सीक्रेट मे बी इन फॉर्म ऑफ कोर वैल्यूज, ethics and beliefs towards by family members of business, which is not preferred being revealed to general public or media channels. Family rules are implemented in business and are to be followed people in charge and family members of the business. These rules regulate activities of members and family business of the whole. ऐसे क्या रूल्स हैं जो फैमिली बिजनेस को सेव कर सकते हैं? Formulate policies, framework, rules. Families must serve the business. Future outlook, accountability, addressing the issues. Addressing the issues. Creating shared vision. Basically shared vision होगा, वैल्यूज होंगी, सब कुछ डिफाइन होगा, तो आपका फैमिली जो बिजनेस है वो सेफ रहेगा। मीनिंग रूल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Formulate policy, framework, and rules. Succession plan is one of the important aspects of formulating policy, framework, and rules. Succession plan should outline exactly how the transfer of leadership will occur and should establish the criteria that hire must meet before moving to the role leadership. बेसिकली अगर हम फॉर्मुलेट देखें पॉलिसीज फ्रेमवर्क में, तो सक्सेशन प्लानिंग इट्स अ मेजर पार्ट कि उसमें आपको पता चलता है कि जिस पोजीशन पे आपने मूव करना है, जो ट्रांजैक्शन होनी है, उसमें उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या आपकी आई मीन जॉब नेचर किस टाइप की होगी, और क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होंगी। फैमिली मस्ट सर्व द बिजनेस। फैमिली member of the family should give their best performance as per the expectation of the company. Member of the family business should perform as effectively as non-family member of the business. बेसिकली फैमिली बिजनेस में यही देखा जाता है कि जो फैमिली मेंबर होता है वो इतना सीरियसली सर्व नहीं कर रहा होता, और जो एम्प्लॉय होता है वो तो जाहिर बात है कि एक प्रॉपर वे से सीरियस वे से सर्व कर रहा होता है। बट ऑन द अदर साइड जो एम्प्लॉय नहीं है, जो ऑनर है, जो स्टेक होल्डर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो अक्सर फैमिली बिजनेस में इग्नोर हो जाती है। Future outlook, business firm should have proper core values which prove to be yardstick of performance of business. Family member should believe that present strategy prove to be obsolete in long run of for the same company. Should be flexible in nature in terms of adjusting to changes taking place in business environment. वही चीज आती है कि जो गैप आता है कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या वे ऑफ वर्किंग होगा, वो थोड़ा सा जो पहली टीम बैठे होते हैं, पहले लोग होते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे होते। अकाउंटेबिलिटी शुड बी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेस इन फैमिली बिजनेस। फैमिली मेंबर्स शुड बी मेड क्लियर अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम by family business, and they are required to prove their efficiency through effective performance. They should be responsible for decisions taken by them during time of their leadership. Addressing the issue, family business who focus on improving their overall company performance should take structured approach to addressing the issue by careful examination of its core values. Members of the family are required to evaluate their core values and understand their relevance in relation to the success of business. Creating shared vision. It refers to communicating vision objective of the company to family and non-family members of the business. Communication of information take place through various sessions of the meeting in company. All the family members should have common and shared vision towards goal attain, attainment in the company.